नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है त्विषा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भारती नेटवर्क पे। आज हम आ पहुँचे हैं द ताज होटल चनक्यापुरी पे, जहाँ पे हो रही है फिल्म कंतारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज आने वाले हैं यहाँ पे ग्रेट स्टार्स, इस मूवी के फिल्म स्टार्स, और हम उनसे मिलने भी वाले हैं। उनकी मुलाकात हम आप लोगों से भी करवाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरे एपिसोड में। यहाँ की स्क्रीनिंग एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं मिस्टर गुलशन सर की भी फ़ोटो लगी हुई है एंड ही इज़ वन ऑफ आवर बिलवड एक्टर्स। एंड आज मूवी बेसिकली फोकस करती है साउथ इंडियन फोकलोर पे और भूत प्रेत के रिचुअल्स पे, तो हम देखेंगे कि उनका क्या रिएक्शन होगा इस सब पे और हमारी ऑडियंस से भी बात करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। With a wonderful teaser. Are you ready? Come on, Delhi, can you make some noise? Let's have the teaser. A very, very warm welcome, sir. Very, very warm welcome. Rishabh ji, thank you so much for everything, Rishabh ji. Thank you. Hello ma'am, what's your name? My name is Prachi Sharma and thank you for having me on your channel. I'm from Bombay. I represent Perfect Woman magazine and a lot of other channels. Thank you so much for having me in Delhi. Okay, so how was the event for your opinion? The Kantara Chapter 1 event was fantastic. I think because Kantara has been such a great film and such a successful film, so Kantara Chapter 1 had to be a great and a mega success. And I can see that here in Delhi, people are giving it a lot of love and regard because I think globally the film has done really very well. Mumbai audiences have loved it. National audience, international audience, global audience has loved the film. So the event was great. It is always good to listen to Rishabh Shetty sir because he's so intelligent, so knowledgeable. He has so much to share. What a creative mind. It's always good to sit with the producer of Humbale. He has made some masterpieces in cinema that are incredible pieces like Mahavatar Narsingha, KGF, and Kantara. All these films, they represent our culture and our tradition in a larger than life way. I believe this event was to celebrate Kantara Chapter 1 and Humbale production for giving us the culturally rooted films and making them mega successful. So I have to thank the team and I have to congratulate the team for giving us Kantara 1. Hi ma'am, what's your name? My name is Shreen Khanna. So ma'am, how was today's event in your opinion? Event was pretty well organized, well summarized, and we had a great time watching the entire star cast, and it was really fun to be here. I had a great time. Event was spectacular. Exactly. बहुत मज़ा आया. That was good. और ऋषभ शेट्टी को देखने के बाद तो I was mesmerizing और बहुत ही कमाल का इवेंट रहा क्योंकि फिल्म बहुत कमाल की थी, इसीलिए लोगों में जोश भी था. So आपने फिल्म देख ली है? हाँ जी, मैंने फिल्म देख ली है. फिल्म का रिव्यू भी मैंने किया था. तो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए. काफ़ी टाइम से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, बहुत से शहरों के अंदर, दिल्ली के अंदर अभी तक नहीं हुई थी क्योंकि जितनी सक्सेस इसने हासिल की है मेरे ख्याल से अभी तक किसी मूवी ने की नहीं है. जो इसके साथ में एक मूवी आई थी सनी संस्कारी की, तुलसी कुमारी, उसने अभी तक अपना बजट नहीं निकाला है और ये मूवी 300 करोड़ प्लस कमा के बैठी है. पहला हफ्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 125 करोड़ में बनी है, तो खुशी तो बनती है, इसीलिए आए. ओके, तो कैसा लगा आपको आज का इवेंट? देखिए त्रिशा, इवेंट तो अच्छा था लेकिन एक कमी रही क्योंकि यहाँ लोगों के मन में इच्छा थी कि वो प्रश्न पूछें, ऋषभ शेट्टी से बात करें और जो दूसरे जो उनके साथ जो एक्टर्स थे उनसे बातचीत करें, फिल्म की यूनिट के साथ बातचीत हो, इंटरेक्शन हो, वो नहीं हो पाया. और एंकरिंग जो कर रहे थे यहाँ पे जो एक महिला थी वो ही जो है प्रश्न पूछ रही थी और वो ही जो है कार्यक्रम का संचालन कर रही थी. तो कहीं ना कहीं एक कमी बस ये
रही। बाकी जैसे प्रश्न पूछे गए और जिस तरह से ऋषभ ने जवाब दिए वो काफ़ी अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ऋषभ ने काफ़ी विस्तार से जो है फ़िल्म के बारे में बताया कि कैसे जो है उन्होंने 2022 में कंतारा बनाई और फिर उसका अब चैप्टर 1 आया है। वैसे तो ये पार्ट 2 है लेकिन इसको नाम चैप्टर 1 दिया है उन्होंने जैसा बताया। तो और ख़ास करके जो प्रकृति और इंसानों के बीच में एक जो संघर्ष की बात है उन्होंने कहा कि उसको जो है दिखाने की कोशिश की गई है। और कर्नाटक में जो कदम जो डायनेस्टी थी उसको लेकर के उन्होंने ये एक फ़िक्शन स्टोरी लिखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ऋषभ जो हैं वो खुद इसमें एक्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने स्टोरी भी लिखी है। It was fantastic and it was really a great thing to invite us in Delhi because this film is a great success, one of the biggest successes we ever have seen. So it is really a proud moment for us to get associated with a film of such a canvas called Kantara, the legend. And I wish that Tamil industry and Telugu industry should flourish from here and should reach to the global world, the global cinema with greater momentum. सारे कास्ट, डायरेक्टर और जो लोग इसके पीछे जो जिन्होंने कहानी लिखी, कहानी का थीम, तो जो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना, जो एम्बियंस था, दैट वाज ऑसम। Hello ma'am, what's your name? Nena. Okay, so I saw you anchoring today for the event. I really am inspired by all the things that you did on the stage. So, do you have anything to say about the actors, about this event for today? Well, I'll say the whole concept is like a team effort and imagination comes to the reality, and we have experienced the creative and the visual effect. So overall it was a very wonderful experience. Hope you liked the trailer and the teaser as well. Yeah, and I was also very surprised for the questions that you asked. So I want to ask that, were these questions made by yourself or they were used somewhere? They were made of a part of a research only. So no questions are like made. It's a part of the scripting or it's a part of the research team only. Okay, so how did you like the people, the audience here? Yeah, very cheer up. Wow, good. Thank you so much, ma'am. Hello, sir. What's your name? I'm Sanjay Agarwal. Okay, sir. What do you do? Well, today I've come for this, what do you call the promotion, the success of Kantara. So I'm a journalist, and here I came with the view like we'll see the stars, and we'll meet our media friends. Okay, so have you seen the movie yet? No, I have not seen. I'm planning. Initially, I didn't get the ticket. I think it's been going house full, it's been going box office success. So there's always a black market. Purane zamane mein, when Amitabh Bachchan was there. So I remember that at Delhi Plaza, and PVR to nahi tha that time, we had Priya Cinemas and all. And everywhere there used to be those black marketing people. So aise shayad isme bhi hua hoga. That online also the Book My Show and those guys were playing mischief. So we didn't get the ticket. Okay. So we came to see the stars themselves today. Okay, so did you get to meet any of the stars? I kept away. There was so much crowd. Yeah. And I'm not that, I've grown up in Bombay. So we grew up in a building where we had the best of stars. The most beautiful lady that answered, Vijayanti Malabali. So we grew up in that. So we don't hold much. They're humans like us. Every being, human being, no? So there's nothing like, I was not even trying to take those ulta khade hoke back selfie, ki wo star kahin aa jaye. Which people do, it gives you a bad vibes, Thank you so much. It was lovely meeting you. Okay, so you attended the whole event for Kantara today. How was your experience? It was overall very good, and actually the vibe was so energetic, and I really liked the trailer and the teaser that was shown to us. Also, I've watched the part 1, so like the Kantara, the first one, which was I think released in the year 2022 if I'm not wrong, and really had a great time watching. It was something very different from all the movies that we have watched so far, and apart from it being so religious, it also educate the people about the cultures which are not much more aware for the people who don't know. That was really good to know about this. Okay, so any actor in specific you like in this movie?
Well, the movie is all about Rishabh, and wherever you see posters, banner, everywhere. I mean, most of them is Rishabh, and yes, I think people who are going to watch is mostly because of him, because the kind of energy he has and the kind of aura he brings to the screen is really commendable. And I think the graph that he sets on the screen is also something that we look forward to, and the actions basically, because South is something, you know, we all, whenever we watch any South movies, we are into like what next, because you don't know what's coming to the next. Like Bollywood movies, still you can predict that what is going to be like what will be the next scene. मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ओवर जो लोग हैं वो आ जाते हैं, ओवर क्राउड हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हो जाता है. बट यहाँ पे ओवर क्राउडेड तो था बट मैनेजमेंट अच्छा था. यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे देख के बड़ा ऑड फील हो रहा हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इस तरह के इवेंट जो है ना वो आपके अंदर एनर्जी भी भरते हैं, और इस तरह के इवेंट जो है ना वो मज़ा भी देते हैं, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी बनते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इवेंट बहुत अच्छा था. बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भाई चलो मैं इस इवेंट का हिस्सा थी. तो जैसा कि आपने देखा, आज का इवेंट बहुत ही सुपर हिट रहा है और हमने काफ़ी लोगों से बात करी और सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है.